Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So in this video, we'll analyze the newspaper, the important articles for 30th of May 2023. So we know about the situation in the state of Manipur. We're again seeing instances of violence, and specifically in the tribal areas in the hilly regions of Manipur. So the Union Home Minister lands in Manipur to initiate peace measures. So there was one question regarding this thing only in this year prelims examination कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या सेंटर की कोई ड्यूटी है to ensure peace in the state because of reasons of internal disturbance. So that is correct. So ये सारे तरीके से you need to think whenever you are reading any news. अब यहाँ पे होम मिनिस्टर इज विजिटिंग मणिपुर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसका बैकग्राउंड है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू से ऑन दिस एंड क्या लॉ बोलता है, क्या फॉलो किया जाता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. Moving forward, so we know ki what happened with the wrestlers. They were like, उनकी जो प्रोटेस्ट आई थी जंतर मंतर पे, वो पूरी लाइक क्लीन कर दी गई है, हटा दी गई सारी चीजें. तो now they are basically planning for their next strategy. Basically जो उनका प्रोटेस्ट था that has not ended. So let's see what would be their next plan of action. And then again there was one question regarding the prison. So prison reforms की हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि which law are we following, what are the main provisions, state की क्या responsibility है, center की क्या है, prisons state subject है, कौन current list में आता है कि union list में आता है. एंड ऑब्वियसली ये प्रिजन रिफॉर्म वाला टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि हम देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ murders which are happening in the prison, and then ये न्यूज भी हमें देखने को मिलती है कि the prisoners they are having access to mobile phone and they are doing their activities. तो बेसिकली कोई पॉइंट नहीं हुआ उनका प्रिजन में होने का. तो these are few things that we keep talking about and ये हमेशा ही न्यूज़पेपर में रहती है ये चीज. देन प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए, पावर पता होने चाहिए प्रेसिडेंट की क्या है, हाउ वुड बी द लाइक एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर वंस अ प्रेसिडेंट रूल दैट इज इम्पोज्ड इन एनी पर्टिकुलर स्टेट. आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट कौन से बेसिस पे मतलब प्रेसिडेंट रूल्स को किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है, कैसे उसको रिमूव करते हैं. So that is one area, and here we are talking this in the context of the state of Manipur. तो वहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं already about the ethnic composition in the state of Manipur, क्या reason रहे about the current situation which is there, and वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. देन आर्टिकल 355 के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले. सो कुकी जोमी वुमेन दे सीक प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. सो पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी दे आर डिमांडिंग कि स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाना चाहिए, एंड दे फील कि आर्टिकल जो 355 है दैट इज नॉट इनफ टू इम्प्रूव द सिचुएशन देयर. On the editorial page, let's see. Okay, this is talking about Karnataka, not important for us. Symbols, substance. So here it is talking about the religious rituals at the opening of the new parliament building defied the propriety. So the inauguration of the new parliament building, we saw that was a massive event. It's a history in India. But here we're talking about what were the religious rituals that were followed during the inauguration of the new parliamentary building. So it was like true to a style he has mastered, talking about a prime minister using every occasion to advance a form of politics that many of his critics find problematic. But Prime Minister presented the aesthetics of the new building as a representation of India's myriad diversity, our rich cultural heritage, and its soaring inspiration. कल भी मैंने बोला था कि whatever are the keywords that has been used during the inauguration by the Prime Minister, कि it is like a symbol of new
new India. So वो सारी चीजें I have already told you, you need to pay attention to those keywords. Then Sengol के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं. If you have missed those videos, आप Google पे भी search करोगे तो you will get all the important things. क्या historical significance है Sengol का, that has already been discussed. Turkey में we are seeing कि Recep Tayyip Erdogan, he again comes to power, and again geography of that area, it is like obviously very important. This year there was question कि Ukraine को कौन सी countries border करती है, तो that was very expected, and I hope कि you have marked it right if you appeared in the examination. So यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है regarding Turkey, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Then Arab League से regarding भी एक क्वेश्चन था, तो ये एरिया न्यूज में था, तो it was expected कि यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ आएगा. देन सुपर कंप्यूटर्स के बारे में भी हम काफी बात कर चुके हैं. इंडिया में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं, पेटाफ्लॉप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमारा क्या टारगेट है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल क्विकली ऑन योर ओन वंस. आफ्टर दैट, सो हाउ हैज द पार्लियामेंट फंक्शन टिल नाउ. अब यहाँ पे हमें ट्रेंड कुछ चीजों का पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, द नंबर ऑफ सेशंस विच आर हैपनिंग, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या वो लाइक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डाउन साइड ट्रेंड या अप साइड ट्रेंड, या क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई ट्रेंड है कि नहीं है. तो 17th लोकसभा, इट कुड बी द शॉर्टेस्ट फुल टर्म ऑफ द लोकसभा सिंस 1952. तो दिस इज बेसिकली सिग्नलिंग टुवर्ड्स कि पार्लियामेंट में जो डिस्ट्रप्शंस देखे जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो एक्चुअल काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 17th लोकसभा है जो, इट कुड बी द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952. So here, the percentage of the bills that were referred to the parliamentary committees, here we have this graph. So you can see ki how sharply it has fallen down, and it is still falling. So this is definitely a cause of concern. And then you need to know everything about the different parliamentary committees. What are different types of parliamentary committees? कौन सी committee में कितने members होते हैं, and क्या composition है, कितने members लोकसभा से आते हैं, कितने राज्यसभा से आते हैं. तो वो सारी basic चीजें you need to be clear with that. And here it is talking about what was the time spent on budget discussions in terms of hours, मतलब कितने घंटे spend किए गए on discussions in the parliament. So you can see again we are moving towards a downside trend, but यहाँ पे आके obviously चीजें थोड़ी हमें दिख रहा है कि कभी increase हो जाता है, कभी fall हो रहा है. मतलब अब हम ऊपर की side का तो अभी हमें नहीं लग रहा है कि we are moving towards upside, but if we compare with the figures of 1980s, so definitely we are at a very lower level. So we know about the climate change, इसकी वजह से definitely we are seeing more number of instances of heat waves. So Shanghai, it records the hottest May day ever in 100 years. In 100 years, it is talking about, not 100 days. So 36.1 degrees Celsius, Shanghai's temperature on Monday, it broke a 100-year-old record for the highest temperature. Now you need to know about the importance of Shanghai. कौन सी ऐसी bodies हैं या banks हैं जहाँ Shanghai is the headquarters of that thing. Then Shanghai Cooperation Organization, that is very important. And इसके अलावा इंडिया में इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट डिप्स इन जनवरी टू मार्च 2023. सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज बीन फॉलिंग. तो यहाँ पे भी पूरे साल का लास्ट 5 years का क्या ट्रेंड रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो पता होना इम्पोर्टेंट है. देन एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, अगेन हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए. तो द एड अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर श्रीलंका. सो इवन लाइक it is also like helping Sri Lanka. And IMF ने भी definitely जो loan था, जो amount था, that has approved under its extended fund facility. So ये term already आ चुकी है prelims में कि extended fund facility, this is related to which body? So that is IMF. And थोड़ा सा हल्का सा detail में you can just search about it. Then lack of teachers in higher education. So this is a topic for mains. Why are there faculty shortages? Why is this a problem?
and what are the two main obstacles which stand in the way of finding viable solutions to the faculty shortages? And is it the lack of educators really? Is it a quantitative problem? या does it go beyond that? मतलब numbers तो definitely कम है ही है, but इसके beyond भी क्या quality of जब teachers की बात करते हैं, क्या वो problem है, क्या infrastructure से related कुछ और problems है या नहीं, क्या funding से related कुछ problem है, तो we'll have a look at that. So we'll just first go through the gist and we'll see कि अगर we like feel okay कि ठीक है, ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, but let's go through the gist first. So faculty shortages, it have existed in India's higher education sector at least since 1980s. So ये अभी की problem तो नहीं है, 1980 से यही problem हम face करते हुए आ रहे हैं and this still continues, but it seemed to have become permanent today. So पहले 1980s में it started, it was बोल सकते हो obviously उस time पे तो temporary problem ही बोलेंगे, but with time now this has become a permanent problem. So the paucity of a sufficient number of faculty members, it undermines the growth of the country's knowledge sector and it hinders its aspiration to be recognized as a Vishwa Guru. So definitely this is one of the biggest hurdles towards our vision of being a Vishwa Guru. So while the government does collect data on colleges and universities, including what is the number of faculty members for the annual All India Survey of Higher Education, this is a voluntary process for various institutions. So it is a voluntary thing and आप थोड़ा और find out कर सकते हो about the All India Survey of Higher Education. Then enrollment numbers के बारे में आपको पता होना चाहिए, gross enrollment ratio कितना है primary, secondary and higher education में. उसके अलावा the information that is provided, it is not verified by any independent agency. So we can't 100% trust upon जो भी information provide की जा रही है by institutions and universities. And stakeholders, they often misunderstand faculty shortages to be a quantitative issue. तो यहाँ पे हमारी सोचने में समझने में भी problem है, क्योंकि ये सिर्फ quantitative problem nahi, it is not a problem merely of just numbers. So nature and scope of the shortage is actually more complex. So problem or zyada badi hai if we have to really understand what is actually the problem. So are these shortages a quantitative issue? उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं. So first kind is related to the fact that the number of faculty members, they varies across the disciplines, institutions and locations. That's very true. There may be even there may even be an oversupply in some disciplines or locations and acute shortages in others. So ये regional problem जो imbalance है, that exists and that is very true and this is definitely one of the challenges. So challenge here is to first achieve some kind of balance between demand and supply in specific disciplines, which could help plug the shortages at different institutions. And second kind of shortage जो देखी जाती है, it is one that many public institutions face, that is the inability to hire faculty despite a desperate need for them. So despite that also, they are not able to successfully hire the respective faculty members. So reason for this is the financial and affect the nearly all state universities. So it is a very common problem and most of them and their constituent colleges, they are also grossly underfunded. So यहाँ पे financial problem भी है. And we are seeing that despite increase in the large increase in the number of students, state governments जो हैं, they have not created or sanctioned new positions. So एक वो चीज भी है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हो रहे तो जो फैकल्टी पोजीशंस हैं वो भी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी. सो थर्ड काइंड ऑफ शॉर्टेज जो है दैट एग्जिस्ट ड्यू टू द अनविलिंगनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू हायर द फैकल्टी मेंबर्स. सो यहाँ पे तो अनविलिंगनेस वाली प्रॉब्लम भी है एंड दिस इज कॉमन इन मेनी प्राइवेट कॉलेजेस कि दे आर नॉट विलिंग टू हायर मोर, क्योंकि देन अगेन उनकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी. So they also hire less qualified people in poorly paid part-time positions instead of better qualified regular faculty members to keep the cost down. So इसमें सबसे easy क्या है, जो आप पार्ट टाइम हायर कर लो, जो क्वालिटी नहीं है, इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ऑब्वियसली उनके नंबर ज्यादा हैं, तो दिस इज वेरी इजी टू डू रादर देन फाइंडिंग द बेस्ट पर्सन या नियर बेस्ट पर्सन वी कैन से. सो एक यहाँ पे भी अनविलिंगनेस में यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है. और जो फोर्थ काइंड ऑफ शॉर्टेज है दैट इज कॉमन टू ऑल अगेन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस.
So that is due to the reservations for the members of OBC and scheduled caste and scheduled tribe groups. So reservation की वजह से again public institutions में एक problem है reservation. It reduces the pool of qualified people sometimes severely. So again, this is one of the major challenges faced by the public institutions कि जब reservation वाली positions को fill करने की बात आ जाती है तो वहां पे number of qualified people is very less. And the fifth kind of shortage is due to an unwillingness among the faculty members to work at select institutions due to their unfavorable location or working and living condition they present. So again, faculty members की भी तो कुछ choices रहेंगी कि उनको इस particular university में they want to, they wish to work there. तो इस वजह से भी again ये हमें imbalance देखने को मिलता है. And जो 6 type of basically faculty shortages अभी हमने बात करी, they are not necessarily mutually exclusive. However, they do indicate कि definitely shortage एक problem है and it is not just limited to numbers alone. All right, so this can be cited in the mains answer also कि obviously मतलब we talked about beyond the quantity problem. So what has India done to curb the unnecessary hysterectomies? So what guidelines government it has put in place to check the hysterectomy rates and what are the treatment options that is available? So itna zyada topic important nahi hai, but we'll just go through the gist. The Union Health Ministry ने recently it has urged the state governments to audit the hysterectomy trends in the public and private hospitals. So सबसे पहली चीज अगर आपको किसी प्रॉब्लम को समझना है तो आपके पास डेटा होना चाहिए. You will be assessing any particular set of data regarding that thing. So this is what even the Union Health Ministry it has urged कि state governments को पहले आप समझो कि क्या trend चल रहा है in the public and the private hospitals as far as hysterectomy is concerned. So this comes in response to Supreme Court petition which is arguing कि women from the marginalized locations they are at the risk of unjustified hysterectomies. So because of this concern, now like this thing comes into the picture. So Supreme Court's reiteration of guidelines came in response to a petition by Dr. Narendra Gupta, and he argued कि जो private hospitals हैं बिहार में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, they have engaged in unethical practices, unnecessary procedures, and they did not inform the women of the side effects क्या हो सकते हैं and take their informed consent. मतलब उनकी consent भी नहीं ली गई for this thing. So this is definitely not acceptable at any cost. And 2019 की अगर हम investigation की बात करें तो it found that women from the rural areas they look at hysterectomies as a way of increasing the days of productive work and earning more wages. मतलब ठीक है अगर आप willingly करना चाहते हो तो उसमें कोई problem नहीं है, but this is one point of view specifically which was found in the rural areas. All right. उसके अलावा यहाँ पे और इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इफ वी गो बाय द डेटा टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेंड है क्या नंबर है, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ hysterectomies were to treat excessive menstrual bleeding or pain that constituted around 51.8% of the cases. Around 25% were for fibroids, and then again 25% for cyst and 11% for uterine disorder or rupture according to the NFHS 5 data. But still studies they have shown that many of these causes they were considered to be treatable and surgery could be avoided. मतलब आप इसको बिना सर्जरी के भी इन सिचुएशन को इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हो and you don't have to necessarily go for hysterectomies. And जो majority of the cases say they have been reported from the socially and economically disadvantaged women. So एक इस एरिया पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. So Northeast gets its first Vande Bharat Express. So आप route मतलब याद कर सकते हो. It will be connecting Guwahati in Assam with the New Jalpaiguri in West Bengal. So it would be taking around 5.5 hours to complete the journey. So that's there.
So it's all political news over this page. So president is going to pay a visit to Suriname and Serbia. So it's important कि आप लोग एक बार इसकी location find out कर लो. Important rivers कौन सी flow करती है इस region में, and अभी के लिए इतना sufficient रहेगा, and उसके आसपास कौन सी water bodies हैं. So that will be sufficient. Then ISRO's GSLV rocket takes navigation satellite into transfer orbit successfully. So कल हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी कि नाविक की जब हम बात करते हैं या इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स एंड क्या उसके लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और बाकी कौन सी कंट्रीज है जिनके खुद के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, एंड ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था. सो ये सारी थोड़ी बेसिक डिटेल्स हमें पहले से पता होनी इम्पोर्टेंट है. एंड दिस मिशन इट हैपेंड आफ्टर द डिबेकल ड्यूरिंग द F-10 मिशन, जब हमें लाइक इशू फेस करना पड़ा व्हिच वाज इन द क्रायोजेनिक स्टेज. तो क्रायोजेनिक स्टेज में कोई प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, बट दिस टाइम वी हैव बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड दिस थिंग. सो दिस इज लॉन्च्ड इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. सो पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट्स कौन सी होती है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो एक बेसिक चीज है. क्रायोजेनिक स्टेज कौन सी स्टेज होती है, GSLV PSLV इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो that would be really good. Then CAG, which is Comptroller and Auditor General of India, voted in as the WHO auditor for a second term. तो पहले तो CAG से related जो basic चीजें हैं, आर्टिकल क्या बात करता है, पावर्स क्या है CAG की, वो सारी पहले हमें पता होनी चाहिए. जब इस आर्टिकल की हम बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू is the Comptroller and Auditor General of India. He has been re-elected as the external auditor of WHO for a 4-year term that would be between 2024 and 27. So he is already holding this position since 2019. So re-election it was held on Monday in the 76th World Health Assembly in Geneva, where CAG of India was re-elected with an overwhelming majority in the first round itself. So he is a member of the United Nations panel of external auditors. तो आप इस panel के बारे में थोड़ा और find out करोगे to have much more clarity. So Kashmir Sufiana Mosiki revives the past. So this definitely is important for us. जो culture से related चीजें हैं from different states and Indian territories, that is important for us. Match the following के terms में question आ सकते हैं. Folk songs, क्या culture है, GI tag से related, ये सारी चीजें important है. UN peacekeeping mission की बात करें तो India to train women from ASEAN member countries. So tailor-made courses to be offered to 2 candidates from each of the member states. So UN peacekeeping mission की बात करें, women in the UN United Nations peacekeeping mission operations, इंडिया में definitely बहुत important role play किया है. एंड यहाँ पे हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो आसियान के आपको मेंबर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए. एंड उसके अलावा फाउंडिंग मेंबर्स कौन सी कंट्रीज थी वो सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. कमिंग टू द वर्ल्ड पेज, ADB it approves around $350 million in budgetary supports to Sri Lanka. ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं ऑलरेडी. ADB के बारे में थोड़ा और फाइंड आउट करोगे कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, एंड शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रपोर्शन किसका ज्यादा है. उसके अलावा IMF की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो हम देख चुके हैं. So Russia issues arrest warrant for US senator over Ukraine remarks, and ये political चीजें चलती रहेंगी. North Korea alerts Japan about plans to launch satellite in coming days. So North Korea definitely हमेशा न्यूज में रहता है. North Korea it is notified to Japan कि अपने बेसिकली अपने प्लान के बारे में उनको थोड़ा इन्फॉर्म किया है कि what is their plan आने वाले टाइम में to launch a satellite, and which may be an attempt to put Pyongyang's first military reconnaissance satellite into the orbit. So Defense Minister, he has ordered Japan's self-defense force to shoot down the satellite or debris if any entered Japanese territory. So that's what they have said and told to Japan. So Erdogan calls for unity, rival slams most unfair election. So Rival is saying that this was most unfair election, not conducted in a democratic manner, but Turkey's re-elected president says that now is the time to set aside the disputes and unite around our national goals. So
टर्की और सीरिया के बीच में कौन सी टेरिटरीज हैं जो न्यूज में चल रही हैं या जो इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो पता होना इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस अब ज्यादा आने लगे हैं क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स में। इस साल भी हमने एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे देखे। देन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पे भी इस साल क्वेश्चन था। तो ये सारी बेसिक चीजें हम डेली बेसिस पे इनको न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये टॉपिक मेंशन कर दिया गया है, हमें इसकी थोड़ी डिटेल में जाने की जरूरत है। ज्यादा इस पे मतलब रिसर्च नहीं करनी है, बट इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीजें हैं, कैसे फंक्शन करती है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, वो सब इम्पोर्टेंट है। So Poland's new law to counter Russia, it could target the opposition. So यहाँ पे नेटो की भी अगर हम बात करें, नेटो में स्वीडन इट इज जॉइंट नेटो एंड डेफिनेटली जो वॉर स्टार्ट हुआ दैट वाज रिगार्डिंग द कंसर्न्स ऑफ रशिया रिगार्डिंग नेटोज एक्सपेंशन टुवर्ड्स इट्स बॉर्डर। सो वो सारी चीजें हैं। नाइजीरिया के बारे में बात करें, हमें पता होना चाहिए अगेन सारी कंट्रीज के बारे में जहाँ पे भी चीजें चल रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, मिलिट्री को हो रहा है कि नहीं, या चाइना कोई अपना मतलब मिलिट्री बेस सेटअप कर रहा है, कौन सी कंट्रीज में उसके मिलिट्री बेस हैं। सो ये सारी चीजें जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो हमें करनी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें खुद थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वो हम नहीं करते। Coming to the business page now, so here RBI governor has to say that directors they should keep vigil on the bank CEOs. So this he said because he has like basically he's like calling for this thing is ask the bank directors to be more assertive and keep a vigil on bank management's actions kya liye ja rahe hain regarding the management of banks is concerned, particularly on the actual and the potential related party transactions, and stressed key the dominance of CEOs in some bank board meetings that is undesirable. The CEO of the banks they cannot dominate. Then like he stressed that there is no room for complacency despite banks' improved financial metrics and urged them to keep the depositors' interest uppermost in their mind. And stressing key independent directors, they must be truly independent in actual sense of the management as well as controlling the shareholders. He said that they are expected to ask pertinent questions and obtain necessary information before taking the decisions. So at times, however, हमें ये देखने को मिलता है कि we noticed कि dominance of जो CEOs है in the board discussions and discussion and decision making, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको दे हैव टू बी रियली इंडिपेंडेंट इन ट्रू एंड एक्चुअल सेंस। Taking up mid newspapers, so here we'll take up this piece in another newspaper। यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकते, यहाँ पे सारी important schemes के बारे में बात की गई है, तो इसको हम दूसरे न्यूज़पेपर में लेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमारे लिए इतना important नहीं है। विल मूव टू द इकोनॉमी पेज। सो बैंक्स फाइंडिंग नोवेल वेज टू कंसील देयर स्ट्रेस्ड लोन्स। मतलब बैंक्स एक तरीके से जो उनके स्ट्रेस्ड एसेट्स है उनको छुपाने के लिए बहुत तरीके अपना रहे हैं, ताकि जो obviously it is about the goodwill of the bank and definitely अगर किसी बैंक के एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो obviously जो उनकी बिजनेस है, बैंक का जो बिजनेस है उस पर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आरबीआई गवर्नर हैज टू से दिस कि बैंक्स मतलब बेसिकली इन अ वे जो उनके एनपीएज हैं दे आर कंसीलिंग देम। So he warns of complacency setting in amid strong and stable capital buffers.
So RBI, it has come across instances of banks using innovative ways to conceal the true status of the stressed loans. यहाँ पे stressed loans की हम बात कर रहे हैं, NPAs की बात कर रहे हैं, तो क्या different categories हैं, कौन सी मतलब less severe to more severe category है, उसका आपको पता होना चाहिए. Evergreening of loans क्या होता है? तो it is a practice by which banks they extend fresh loans to a borrower who is on the verge of a default. मतलब आप अपना कर्जा देने के लिए और लोन लेते हो ताकि आपकी जो EMIs है वो आप उस लोन के थ्रू चुका सको. तो दिस इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स एंड दिस इज बेसिकली नॉट अ गुड साइन कि अगर हमें ज्यादा ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं. एंड और जो बाकी मेथड्स यूज किए जाते हैं दैट इंक्लूड्स ब्रिंगिंग द टू लेंडर्स टुगेदर टू एवरग्रीन ईच अदर्स लोन्स बाय सेल एंड बाय बैक ऑफ लोन्स और द डेट इंस्ट्रूमेंट्स. देन जो गुड बोरोवर्स होते हैं दे आर बीइंग परसुएडेड टू एंटर इनटू स्ट्रक्चर्ड डील्स विद अ स्ट्रेस्ड बोरोवर टू कंसील द स्ट्रेस. सो जो गुड बोरोवर्स हैं जो टाइमली अपनी रीपेमेंट्स कर रहे हैं उनको और जो स्ट्रेस्ड बोरोवर है उनके बीच में कोई डील करा देते हैं ताकि जो स्ट्रेस्ड बोरोवर वाली चीज है या जो स्ट्रेस लोन है वो हाईलाइट ना हो. एंड वेज टू एवरग्रीन की अगर हम बात करें तो उसको भी डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है. दैट इंक्लूड्स यूज ऑफ इंटरनल और ऑफिस अकाउंट्स टू एडजस्ट द बोरोवर्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस. तो इन चीजों को एडजस्ट किया जाता है एंड अगेन वो चीज फिर सामने जो एक्चुअल सिचुएशन है वो नहीं पता चल पाती. रेन्यूअल ऑफ नोज लोन्स और डिसबर्समेंट ऑफ द न्यू और एडिशनल लोन्स टू द स्ट्रेस्ड बोरोवर और रिलेटेड एंटिटीज क्लोज टू द रीपेमेंट डेट ऑफ द अर्लियर लोन्स. तो ये डिफरेंट तरीके हैं एंड डेफिनेटली दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल. So asset liability management of the banks, that is important. Over aggressive growth या underpricing या overpricing the products both on the credit and deposit sides. Concentration or the lack of adequate diversification in the deposit or credit profile can expose the banks to higher risk and vulnerability. So अगर banks अभी ऐसी practices कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो उनका रिस्क है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो अपने फायदे के लिए ऐसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम. Then RBI governor, he also expressed concern that there exist gaps in the corporate governance of the banks despite the regulator issuing guidelines. So RBI जो guidelines issue करता है and जो practices follow की जाती है by the banks as far as corporate governance is concerned, तो उसमें भी काफी gap देखा जा रहा है. And this is another thing that was highlighted by Raghuram Rajan. So sorry, Shaktikant Das. So who's the RBI governor right now, and he said कि एक joint responsibility है of the chairman of the board and the directors to ensure कि there is robust governance in the banks. Then बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंश्योर करोगे कि जो पॉलिसीज हैं दे आर इन प्लेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ हो रहे हैं या कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं एंड डील विद देम आल्सो. सो ये बैंक का जो बोर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव एन आई एंड कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ थिंग्स आर working and how they are functioning. So these were few things that were highlighted by the RBI governor. Then 500 biogas plants to tackle stubble burning and pollution. So isme around 500 biogas plants, they are expected to come up across country with financial support from the center to help in check the stubble burning and air pollution. And स्टबल बर्निंग डेफिनेटली जो पराली को जलाया जाता है इट इज जो मतलब खेतों में बच जाती है आफ्टर कल्टीवेशन एंड आफ्टर यू फाइनली हार्वेस्ट द कल्टीवेशन, तो उसको जलाते हैं तो वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है इन नॉर्दर्न इंडिया. तो दैट इज स्पेसिफिकली सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हीट एंड पैडी to prepare for the round of seeding. So farmers across northern states, like especially in Punjab, Haryana, and UP, they burned the crop debris in late October and November, worsening air pollution in the process. So as per the data of the Lawrence Berkeley National Laboratory of US, उनका कहना ये है कि जो more than 90% of इंडिया में फायर रिलेटेड एक्सपोजर होते हैं, they increase because of emissions from the agricultural fires in the northwestern states.
एंड 64% फ्रॉम पंजाब से हैं, 11% हरियाणा में है, 5.7% यूपी से है। सो इवन पंजाब में जो फायर इंस्टेंसेस देखे जाते हैं उसकी वजह से दिल्ली में भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो 64% केसेस आर रिपोर्टेड, या शेयर की अगर हम बात करें तो दैट इज फ्रॉम पंजाब। सो यहाँ पे बायोगैस प्लांट्स हमें कैसे हेल्प करेंगे, तो जो भी बायोगैस प्लांट्स प्लान किए गए हैं डिफरेंट लोकेशंस में, तो they would source the crop stubbles collected from the fields after harvest as the raw material to produce the gas. So जो बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें जो क्रॉप का स्टबल है दैट एक्ट्स एज द रॉ मटेरियल। तो स्टबल को आपको जलाना नहीं पड़ेगा फार्मर्स को फील्ड्स में, एंड दे कैन ऑल्सो सेल इट टू दीज बायोगैस प्लांट्स। तो आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। So जो SATAT scheme है of the center which encourages businesses to set up these compressed biogas plants to supply the fuel to auto fuel retailers like Indian Oil Corporation, that is emerging as a good model। मतलब फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंट की भी अगर हम बात करें ऑल एंड ऑन लेवल पे, तो वहाँ पे भी हमें इससे काफी फायदा हो पाएगा। एंड डेफिनेटली दिस इज renewable source of energy, we can say more cleaner source of energy। And besides the center also it offered a waste to health scheme this year in union budget to promote circular economy। एंड ये जो स्कीम यहाँ पे मेंशन की गई है इसके बारे में एक बार आप थोड़ा सा और फाइंड आउट कर सकते हो। एंड वेस्ट टू हेल्थ स्कीम के बारे में सर्च करोगे, सर्कुलर इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर इकोनॉमी। एंड इसके अलावा विद दिस वन कैन सेव अ लॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन द एग्रीकल्चर बायो वेस्ट, and government is allocated around rupees 10,000 crores to build these 500 biogas plants। So India and Indonesia, they complete a joint report on the Sabang port facility, sorry, Sabang port feasibility। So here when we have a look at the location of this Sabang port, we can see यहाँ Indonesia जो सुमत्रा आइलैंड है यहाँ पे टिप पे सबांग पोर्ट इज लोकेटेड। बेसिकली यहाँ पे यू सी की जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी दैट इज द मलक्का स्ट्रेट, एंड ये जो ब्लू कलर में सारे आइलैंड्स हाईलाइटेड है दिस इज इंडोनेशिया। So India and Indonesia, they have completed a joint feasibility study on developing strategically valuable Sabang port। Definitely जो location है, you can see Malacca Strait के पास है। So that's why its location became strategically very important। So Sabang port, it is located in the province of Aceh in the and it is like roughly 700 kilometers from Andaman and Nicobar Islands। So that is there। And ओके, टेकिंग अ फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे देखते हैं हम स्कीम्स के बारे में। इट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली 9 years में जो बीजेपी गवर्नमेंट रही उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या डेवलपमेंट्स रही। सो the title goes like building new India, ensuring welfare of the poor। So serving the poor, honoring the marginalized के इस एरिया से रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए गए। 80 करोड़ पीपल दे आर गेटिंग फ्री फूड ग्रेन्स। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए। वो 3 करोड़ फैमिलीज दे रिसीव पक्का हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। 11.72 करोड़ टॉयलेट्स दे वर बिल्ट अंडर स्वच्छ भारत, and 12 crore households they get the tap water connections। So Nari Shakti driving the nation's progress, यहाँ पे smoke free kitchen for the women under the Ujjwala Yojana, ये important हो जाता है। Respect for the women, that was ensured permanent commission in the armed forces, that happened। And apart from this 27 crore mudra loans भी दिए गए हैं to women beneficiaries, and paid maternity leave increased from 12 weeks to 26 weeks। Then fulfilling the aspirations of Yuva Shakti, talking about the youth। So one college in every 2 days and one university every week, that was established। Number of medical colleges, that is also increased। New IIMs and IITs बनाए गए हैं, AIMS बनाया गया है। And
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में स्किल ट्रेनिंग पे एम्फेसिस दिया गया है एंड इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. यूनिकॉर्न्स की बात करें, ओवर 100 यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया, 97,000 स्टार्टअप्स आर देयर इन द कंट्री. टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स वेलफेयर, पीएम किसान स्कीम, वी नो अबाउट इट. उसके अलावा एग्रीकल्चरल बजट की भी बात करें तो इट इज इंक्रीज्ड 6-fold. एंड उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है, दैट इज देयर. नीम कोटेड यूरिया, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में आ चुका है. प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ई नैम, ये सब आपको पता होना चाहिए. जिससे बेसिकली ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है फार्मर्स के लिए. डेफिनेटली जो ईज ऑफ एक्सेस है दैट इज इंक्रीज्ड. बट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे एम्स बनाए गए हैं. उसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम है, डेफिनेटली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी स्कीम है. जन औषधि केंद्र के बारे में वी नीड टू नो मोर अबाउट देम. क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल की गई है बहुत चीपर प्राइस पे, 50 to 90% चीपर प्राइस पे यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है. सेविंग ऑफ ₹20,000 crore ऑफ द नीडी पीपल. Infrastructure definitely for new India. High speed trains, Vande Bharat trains, which are indigenous. These are semi high speed trains. Number of airports जो हैं वो double हो गए हैं. Metro rail networks expand किए गए हैं. Construction of national highways, that is also doubled. Rural roads जो construct की गई in last 9 years, that is around 3.53 lakh of kilometers. Then rising stature of India in the world. So total exports, they cross $750 billion. We are providing new impetus to solve the global issues through G20 presidency, extending help to more than 100 countries through our vaccine Maitri program. International Yoga Day celebrate किया जाता है. International Solar Alliance ने इंडिया में बहुत important role play किया. Mission Life, International Year of Millets, that is highlighting India's leading role on the global stage. And विरासत और विकास की अगर हम बात करें तो magnificent Shri Ram Temple, then honoring the faith of the people through reconstruction, the cultural and spiritual heritage sites, more than 230 stolen artifacts, they were brought back to India, shedding of colonial mindset, countries marching towards a developed India. तो decolonization की हम बात करते हैं तो ये सारे important चीजें, इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे काम हुआ है. जो स्कीम्स मेंशन्ड है उसके बारे में आप हर एक स्कीम के बारे में थोड़ा सा सर्च करोगे, फाइंड आउट करोगे, चीजों को समझोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. So today a new India is setting new goals and forging new paths. There is new enthusiasm and a new zeal. So there is a new journey and a new perspective. The direction is also new, the vision is also new, and the resolve is new, and confidence is new. So such a powerful statement coming from our Prime Minister. And for more information, you can also visit the Namo app, and you can download the app through scanning this QR code as well. And if you get some more useful information over there. Then coming to the news, let's see. Governance gaps at some banks. This we've already seen. What does the RBI governor has to say on this? Then so bank privatization की बात करें तो that is going to happen as per the schedule, as per our finance minister, and government is planning to minimize the number of state-run firms. So as we say कि there government has no business to do business. So in that context, we are seeing कि government proper plan है of moving towards privatization. So privatization, the public sector banks will go on as per the schedule, and there is no change in it. And the government is monitoring inflation. We are monitoring all the data on the ground level. Also, inflation is already moderating. So we are moving towards a comfortable situation right now. But आने वाले time में भी अगर हम बोले कि अगर अभी we are moving towards moderating inflation, we are seeing कि inflation कम होती हुई दिखाई दे रही है. तो we can't be 100% sure या even 90% sure कि क्या future में भी या towards the end of this year क्या inflation कंफर्टेबल टेरिटरी में रहेगी या नहीं रहेगी. बिकॉज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फ्यूचर में भी कुछ चैलेंजेस हैं. इफ यू आर एबल टू सेल थ्रू देम सक्सेसफुली, देन डेफिनेटली इन्फ्लेशन वुड रिमेन अंडर कंट्रोल.
So government is keeping a close watch on inflation also. So wheat prices की हम बात करें, they have increased in recent months. Government released the grains from the buffer stock to cool down the prices so that जो demand supply mismatch है वो थोड़ा कम हो जाए. Wherever intervention that is required, we have been doing that. So that's there. States की capital expenditure की बात करें तो that remains flat in financial year 2023, excluding the central support. So excluding that, अगर हम state का जो capital expenditure को understand करने की कोशिश करें, trend को समझने की कोशिश करें, तो that remains flat. So you can see here it is talking about मतलब कंपैरिजन है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा, टैक्स रेवेन्यूज क्या रहे, बोरोविंग्स कितनी रही. तो इसमें यू कैन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव है. वी आर कंपेयरिंग, तो हम फाइनेंशियल 2023 के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगी कि दैट इज नेगेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो दैट इज slightly declined, but revenue expenditure को हमें we need to shift it towards the capital expenditure. Total expenditure भी कम हुआ है. Tax revenues definitely बहुत ज्यादा कम हुए हैं. You can see पहले 32.7 के लेवल पे थे, अब 15.4% ग्रोथ देखी जा रही है. Borrowings we can say पहले नेगेटिव थी बट अगेन पॉजिटिव हो गई है 5.7%. And this we can also say because of COVID-19 also this can be possible. And capital expenditure by all the states, this is given in trillion rupees. So यहाँ पे different financial year के figures दी गई हैं. You can see कि this is basically last 5 years में how it has been there. So 4.87 रहा, then 4.6 थोड़ा सा कम हुआ, again कम हुआ, then it started to rise and again it has fallen down. So एक कोई यूनिफॉर्म ट्रेंड हम नहीं बोल सकते हैं. पहले इट वाज लाइक डिक्रीजिंग, देन वी सॉ देयर वाज मैसिव इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 2022. उसके बाद अगेन काफी डिक्लाइन हुआ है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों इस चीज पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली दोनों इंपॉर्टेंट है. वी कांट से कि अगर सेंट्रल बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर बट स्टेट उनको ज्यादा नहीं कर पा रही है, तो उस चीज का इतना ज्यादा जो हमारा एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जो हम सोचते हैं कि होना चाहिए नहीं हो पाएगा. सो यहाँ पे दोनों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर और स्टेट्स, बोथ ऑफ देम. FDI equity inflows की हम बात करें तो they have contracted by 22% to around $46 billion in the previous financial year, and this is lowest in the last 4 years. So ये trend भी it's important. जो ये मेन एरियाज हैं यहाँ पे एटलीस्ट हमें ट्रेंड के बारे में, फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए. तो FDI equity inflows they have declined by 22% in the last 4 years. This is at the lowest level. So decline seen last year, it was largely because of lower investor interest in the country's computer hardware and software, metals. So these areas were not so attractive. And FDI जो total inflows हैं, which includes equity inflows and reinvested earnings also, वहाँ पे भी हमें decline देखने को मिला of around 16%. So सिंगापुर की बात करें तो that has remained the biggest source of FDI in India, which accounted for around $17.3 billion of investment as against $15.8 billion in the year before that. So Singapore से FDI increase भी हुई है and India के लिए Singapore is the biggest source of FDI inflows. Next big source is Mauritius. तो उसका share however कम हुआ है. एंड FDI इनफ्लोज अगर हम UAE और साइप्रस की बात करें तो वहां से हमें बिग जंप देखने को मिला है. दो ओवरऑल जो उनका शेयर है टोटल FDI में दैट इज स्टिल वेरी लो, बट अगर सिर्फ हम कंट्रीज की बात करें तो UAE से और साइप्रस से वी आर सीइंग कि FDI इनफ्लो इंडिया में मतलब बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है. मॉरिशस का कम हुआ है एंड सिंगापुर का इंक्रीज हुआ है एंड सिंगापुर इज एट नंबर 1 पोजिशन. एंड बात करें ओनली लार्ज सेक्टर में हमने सिर्फ देखने को मिला है इंक्रीज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज सेक्टर, जहाँ पे इनफ्लोज दे वर रिकॉर्डेड एट $8.7 billion. सो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में FDI लास्ट ईयर इट वाज 9.3 billion, वो मतलब डेफिनेटली कम हुई है. ऑटो सेक्टर में भी FDI इट हैज फॉलन, मेटलर्जी में FDI इट हैज फॉलन,
एंड स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, मतलब महाराष्ट्र वाज एट नंबर 1 पोजीशन एफडीआई इनफ्लो की। अगर हम बात करें रेसिपिएंट स्टेट में, तो सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, व्हिच इज फॉलोड बाय कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु एंड देन हरियाणा। सो दिस क्रोनोलॉजी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, कौन सी कंट्रीज से मैक्सिमम आ रही है, डिफरेंट कंट्रीज से भी स्पेसिफिकली ट्रेंड पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री से इंक्रीज हो रही है, कौन सी से फॉल हो रही है। एंड स्पेसिफिकली यूएई और साइप्रस से हमें बहुत ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात कर रहे थे, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हिट्स न्यू लो ऑफ 6.8% इन January to March. So that is a good thing. Lowest level since the launch of the PLFS survey, periodic labor force survey जो किया जाता है। The G20 members, they are working to define the startups. Startup 20, which is the startup engagement group of G20, it will meet in Goa this weekend to arrive at a definition framework of startups across the member countries. This would help open up the market access and avenues of finance for the new companies and the group. So having that common definition बहुत ही important चीज है, but at the same time it is very difficult also. Finally, coming to the Indian Express newspaper. So we've already have had a look at all these different schemes that were launched during last 9 years. So lift off, this we have talked about yesterday, NVS 01 lift offs from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Then we have talked about कि RBI गवर्नर का क्या कहना है regarding कि जो भी मतलब different तरीके से banks they are concealing their stressed assets उससे regarding, and no minister is there in Manipur. He like held talks with Kukis and Metis. So Kukis the tribal community, Metis are the non-tribal, but Metis जो है majority में है state में. Ethnic composition already बहुत बार discuss कर चुके हैं. So coming to editorial page, the challenge of change. So new parliament की बात हो रही है, to welfare in 9 years. Modi government has moved the nation's story forward. So this is an article by the Union Finance Minister. So often says, Prime Minister often says that we have not come here to enjoy the power, but to bring about fundamental changes in the critical areas of governance. So अगर आपसे कोई पूछे कि what are the critical areas of governance, so you need to know about that. 9 years is enough time to prove that we have walked the talk. So new parliament built in record time, abrogation of Article 370 किया गया, pushing up the economy into the world's top 5 despite COVID-19. Then there was amalgamation of 10 state-owned banks to 4 banks and getting them into prime health. Then GST लाया गया, insolvency and bankruptcy code आया 2016 में, digital public infrastructure yielding 6 billion payment transactions in a month. 74 airports built किए गए हैं, delivery of 6 notoriously delayed infrastructure projects हुआ, repeal of 1400 archaic laws. जब हम decolonization की बात करते हैं, 39,000 compliances रहे, permanent commission for women in the armed forces, highest ever defense exports हुआ है, becoming the 3rd largest producer of renewable energy globally. That's a big achievement. These are few of the outcomes of the fundamental changes की जो हमने अभी starting में बात करी. And it would not be an exaggeration to say that 3 of the 9 years saw challenges beyond our control. चाहे आप pandemic की बात करो, second wave में specifically बहुत ज़्यादा बड़ा challenge था. Volatility in fuel and fertilizer prices रहा because of the Ukraine war that have led to like spillovers globally. So that was another challenge जो हमारे control के under नहीं था.
Then to provide immunity to the large population, जो vaccination में हमने developments देखी, milestones हमने achieve किए, that was commendable. Thereafter, the emphasis was on manufacturing sufficient doses to meet the urgency. And then again, to get our people vaccinated, that was again a big task. India conducted the biggest vaccination drive, administering 220 vaccines free of charge. So that's there. And moving forward. So definitely ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है that is gradually coming under pressure, क्योंकि globally बहुत सारी economies हैं which are moving towards downside. We are expecting in recession because अभी हमने recently जर्मनी की भी बात करी थी. We are saying कि it is heading towards a recession क्योंकि last के जो 2 consecutive quarters रहे वहाँ पे हमें स्लो डाउन देखने को मिला है ग्रोथ में. तो जर्मन इकोनॉमी यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन भी की गई है कि डेटा रिलीज लास्ट वीक शोड की जो जर्मन इकोनॉमी है इट इज स्लिड इनटू अ रिसेशन. इट हैज स्लिड, ये मतलब बोला जा रहा है कि रिसेशन वहाँ पे, इट हैज एंटर्ड रिसेशन. एंड जीडीपी फेल बाय 0.3% इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर में आफ्टर अ ड्रॉप ऑफ 0.5% अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में. सो दैट्स देयर. सो यूएस इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे डेट सीलिंग के क्राइसिस बहुत बड़ा इशू चल रहा है. एंड ये भी बोला जा रहा था कि इफ दैट टर्न्स इनटू रियलिटी तो दैट कैन बी बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. यूके की बात करें, इट इज लाइक इट माइट जस्ट अवॉइड एंटरिंग इनटू अ रिसेशन दिस ईयर, बट आने वाले साल में क्या होगा वी डोंट नो अबाउट दैट. उसके अलावा ग्लोबल भी इकोनॉमिक स्लो डाउन की भी अगर हम देखें डेटा को तो दैट इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन. चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे भी इतने ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं हमें देखने को, स्पेसिफिकली व्हेन द इकोनॉमी इट वाज ओपनड अप आफ्टर द कोविड-19. and global economic outlook that is also definitely weakening because of that. Singapore की बात करें which is a major entry port of the trade and capital flows, तो वहां पे भी that thing has contracted in the first quarter. So effects of a slowing global economy on India, they are already evident because जो हमारे exports हैं, they are slowing down after growing by 17% the first half of the previous financial year. जो country का merchandise exports है, that is plummeted in the second half of the year, and that is contracted by 3.7%. And April this year, goods exports contracted further 12.7%. So definitely because of this जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वहाँ पे हमारे लिए चैलेंज है. वी नीड टू डील विद दिस थिंग. सॉल्यूशंस की बात करें तो अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो कि वी कैन लाइक जो हमारे लिए सेवियर है दैट इज आवर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. उसके अलावा वी कैन फोकस मोर अपॉन साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर वी कैन यू नो there exists the potential of increasing the exports there. एंड इसके अलावा बायलेटरल जो अग्रीमेंट्स पे हम फोकस कर रहे हैं दैट कैन ऑल्सो हेल्प अस. So these can be some of the areas where it can provide relief to our export sector. So Uganda it has enacted a harsh anti-LGBTQ law that carries death penalty also. So this is like completely opposite to what is actually happening globally. Countries, they are moving towards, accepting this community, and definitely they are also human. So you can't be so harsh कि you're coming up with death penalty. But anyways, हमें बस पता होना चाहिए कौन सी country में क्या किया जा रहा है. So that's there. Japan missiles on alert after North Korea warns it will launch the satellite. ये हम देख चुके हैं. China announces the plan to land astronauts on moon by the end of 2030. So US has set its lunar surface landing target to 2025. So different countries get different targets हैं. Beijing wars with Washington. So plans for permanent crewed bases on the moon, they are also being considered by both the countries, raising questions about the rights and the interest on the lunar surface. So US law tightly restricts cooperation between two countries' space programs, and China says it welcomes the foreign collaborations. Those they have like thus far been limited to scientific research only so far.
So as per a study, it is being said that because of the rising sea level, New York City that is sinking. So यहाँ तो न्यूयॉर्क की बात की जा रही है, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उनका क्या होगा? You can just imagine. Explain page पे history of insurgency in Manipur. Again, it is a repeat, and you can just go through it once on your own, completely on your own. History of conflict बात कर चुके हैं हम. Government का क्या reaction है? Kuki Zumi insurgent groups हैं. Then these are the tribal groups which resides in Manipur. यहाँ पे district and people कौन से मतलब tribal community कहाँ reside करती है? मतलब tribal community hilly areas में concentrated है. जो non-tribals हैं, they are in the plain section, and जो मतलब hilly regions comprises of 90% of the geographical area of the state of Manipur. But जो non-tribals हैं, they are in majority. So ये सारे like disputes हैं, and you need to have clarity. Dominant groups, insurgent groups, and क्या politics चल रही है. So several hits and a few misses again. From being one of the fragile 5 countries to regaining the position of the world's fastest growing major economy. India का जो graph रहा है, it has trended upward since 2014. However, when we talk about the fruits of economic growth, they are not getting distributed evenly enough. So economic जो inequality है, that has been increasing. That is one area of concern, and this is showing up in relatively poor jobs. Per capita income statistics से भी हमें पता चल रहा है about growing gap between the rich and poor, या growing income inequality या economic inequality. So absolute GDP growth rate की अगर हम बात करें तो यहाँ पे according to the official estimates which is released on 28th Feb, absolute level of India's GDP at the end of March 2023 was around rupees 159.7 lakh crores compared to rupees 98 lakh crores at the end of March 2014. So you can see the change, and this means कि जो इंडिया की GDP है, it has grown by 63% over the last 9 years. And India's absolute GDP grew by 97% in the 9 preceding years. So absolute GDP, it has grown by 97%. And apart from that, average income levels की अगर हम बात करें तो 2013-14 में जो per capita GDP था, it was rupees 78,000, and right now when we have a look at this figure at the end of 2022-23 financial year, it has increased to rupees 1,15,000. So this means कि income of average Indian, it has went up by around 47% in the last 9 years. And this is on the basis of constant prices. Constant prices मतलब base year के basis पे we are seeing कि the increase या जो भी हम figures assess कर रहे हैं. उसके अलावा IMF के डेटा को अगर हम देखें तो इंडिया की जो estimated per capita income है in 2023, that is around $2,600, and it is just overtaken Bangladesh. But Bangladesh, it had gone past India in this metric in 2019. तो यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए चैलेंज है जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं. एंड उसके अलावा इंडोनेशिया की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड $5,000, ब्राजील की 9,670, चाइना की $13,720 है, एंड यूके की $46,000 है. तो यू कैन इमेजिन इंडिया कितना पीछे. यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज की सारी फिगर्स दे रखी है, तो इंडिया इज एट द लोवेस्ट लेवल. रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो डेफिनेटली कोविड-19 की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है ग्लोबली सभी कंट्रीज के लिए. जॉब्स एंड स्ट्रक्चरल चेंज की हम बात करें तो फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, डेफिनेटली India is going to be at number 1 when we talk about the most populous country in the world. So job creation, it is even more important than increasing its GDP in order to reduce the widespread poverty in a sustainable manner. So हम jobless growth की भी बात करते हैं, तो इसलिए job area is very important, and given that we are going to be the most populous country in the world, so definitely we need to focus here as well. So structural transformation in economy की अगर हम बात करें, जहाँ पे more and more number of people they move away from predominantly agrarian work to more productive and better paying sectors like manufacturing या services,
That is important. So this is the structural change जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि major proportion of जो population है, more than 50%, that is engaged in the agricultural sector. So we need to ensure कि they move out of the agricultural sector and either move towards manufacturing or the services sector, which is much more, we can say, advanced, which has better paying options, which is more productive and efficient. So the government, it has tried to bring this structural change, structural transformation इस तरफ move करने की कोशिश की गई है from like laws and different policies like Make in India की बात करें, production linked incentive scheme की बात करें, and जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज कर सकें. But India, it continues to face considerable employment related stress. So जो हमारा unemployment level है, that has risen to 45-year high. So that is one area of concern. Poverty और inequality की बात करें तो still poverty इंडिया में सबसे ज्यादा है. Globally अगर हम सारी countries में देखें तो जो last official estimates थे हमारे पास poverty के, वो हमारे पास अभी भी still 2009 के levels ही हैं. And World Bank की जो latest poverty report है, that was published in October 2022, two things stand out from that. पहली, as a country, India has the most number of living people in the abject poverty. So this is one area of concern. We have like around 137 million who are living at rupees 46 per day, and around 612 million, they were living at rupees 78 per day. So this is from 2019. So this is one challenge, and pandemic made things worse. So pandemic की वजह से poverty numbers जो हैं, they have again increased by मतलब somewhere between 23 million to 56 million. तो poverty हमारे लिए एक बहुत बड़ा challenge है. Financial stability की बात करें तो yes, our economy is resilient. जो globally challenges आते हैं, जो global problems आती है, तो उसका इतना ज़्यादा इंडिया के ऊपर impact नहीं होता है. तो we see कि from 2014 many Indian companies they were over leveraged, मतलब बहुत ज़्यादा debt लिया हुआ था उन्होंने, and banks they were saddled with growing pile of NPAs. So हम 2014 की बात कर रहे हैं, but now like they have held back new investments. So the government, it has done very well in both these aspects. So यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा development देखने को मिला है. जो debt की बात करें या जो NPAs की बात करें, they have been coming down. एक्सचेंज रेट की बात करें तो सिंस द बल्क ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो यूएस डॉलर्स में होता है, तो रुपीज एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द डॉलर इट ऑफन कैप्चर्स द लाइक रियलिटी क्या है इंडिया का जो ट्रेड परफॉर्मेंस है एंड इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो स्पेसिफिकली अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो इंडियन रुपी वाज डेप्रिशिएटिंग, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ जो एफपीआईज थे दे वर विड्रॉइंग फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, तो उसकी वजह से हमें मेजरली डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा था. तो डेप्रिसिएशन से डेफिनेटली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम जो इम्पोर्ट्स हैं दे बिकम एक्सपेंसिव. सो जो एक्सचेंज रेट है दैट गेट्स वीकेंड इफ इंडिया इम्पोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, एंड वाइस वर्सा इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. सो इट स्ट्रेंथन्स if India it attracts more of foreign investments and vice versa. So rupee, it has been like it has seen sustained weakening. This is not necessarily a bad thing for a developing country like India. So sustained weakening हमें देखने को मिली है Indian rupee में, but again for a developing country we cannot say कि it is completely bad या completely negative या ये हमें help नहीं करेगा. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जीएसटी लेके आया गया, आईबीसी आया है, आधार कार्ड, डेफिनेटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जा रहा है, कट इन कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल इन ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी लास्ट 9 years में क्या चेंजेस हुए. सो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. US debt ceiling crisis already discussed a number of times. कल भी हमने देखा था कि as a short term measure, obviously वो short term solution ही बोलेंगे हम, जो debt ceiling की limit है उसको increase कर दिया गया है. So that's all for today. Thank you so much for joining us in this video, and this is a very important, like आज हमें बहुत ज़्यादा important articles discuss करने को मिले. So I hope you have understood them really well, and do subscribe to the channel and also hit the like button for this video.